So let's get started. ठीक है, तो कस्टमर डिस्कवरी इज द नेम ऑफ द टॉपिक. कस्टमर डिस्कवरी क्या होता है, we'll talk about it in 1 minute. But before that, I can give you some context. In a business or in a startup, there is a customer development journey that happens. It's not the journey of you can call it a customer development journey. Parallelly, startup develops into a company. तो ये दोनों हैंड इन हैंड होती है ये प्रोसेस. एक तरफ से कस्टमर डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ से स्टार्टअप बिल्ड हो रहा है, एंड इट्स मैच्योरिंग इनटू अ कंपनी. हैंड इन हैंड प्रोसेसेस है, बट अब कस्टमर वाले इसको फोकस करते हैं. तो स्टार्टअप वाला जो आपका बिजनेस का जो जर्नी है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ डेवलप हो जाता है हैंड इन हैंड. ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं कस्टमर डेवलपमेंट जर्नी में. देयर इज इट स्टार्ट्स विद कस्टमर डिस्कवरी, it goes to customer validation, then it goes to customer creation and company building. So it's all 4 C's you can remember: customer discovery, customer validation, customer creation, and then building a company or company building. Discovery से शुरू होता है, फिर customer validation तक जाता है, फिर create करते हैं हम उनको, convert करते हैं, activate करते हैं, scale करते हैं, that is creation. And company building is you have found your product market fit, you have found your repeated scaling profitable business model, and you are graduating into a company. ये 4 steps का customer development process होता है for any startup or for any company. ठीक है, that wants to have proven customers or that wants to have super fans to do repeated business to and from. You need to build a company, and in order to build a company you need to go through these 4 stages of customer development. First step is customer discovery. Discovery, as the name suggests, we discover the customers basically. कौन है, क्या है ना, कौन से जगह पे डिमांड है, किस तरह से रीच करना है. We will employ various tools to discover the customers, our target market, wherever they are, what do they want, are we solving the right business problem, and so on. फिर आता है वैलिडेशन. वैलिडेशन में क्या होता है, एंड डिस्कवरी में व्हाट हैपेंस, डिस्कवरी फेज में वी कैप्चर द फाउंडर्स विजन और द कंपनीज विजन एंड टर्न इट इनटू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट्स we then create or develop plan to test those experiments into market and turn them into facts. Then we devise tests to run these hypotheses. Discovery में हम अपने विजन को hypothesis के रूप में लिखते हैं 7-8 points, and then we convert it to tests, and then we run those tests against the market, against the customers. ठीक है, validation में these tests tell us in the second stage. Validation में क्या होता है, these tests के जो results आते हैं that tell us whether the resulting business model is repeatable or not and scalable or not. If not, you return to the customer discovery. तो discovery, validation, creation, ये तीनों repeated loops हैं, है ना. एक बार कर लिया ऐसा नहीं है. You may do some customer discovery, then you may go do some validation, then you can come back to customer discovery if you haven't found the answers to your question. ठीक है, तो डिस्कवरी में विजन होता है, विजन को हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट्स बना के रन करते हैं, रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स. देन वैलिडेशन, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वी नो वेदर द आवर बिजनेस मॉडल इज प्रॉफिटेबल एंड रिपीटेबल. इफ नॉट, वी रिटर्न टू द डिस्कवरी. देन क्रिएशन इज मोर लाइक एग्जीक्यूशन. थर्ड स्टेप जो होता है क्रिएशन, इसमें इज मोर लाइक एन एग्जीक्यूशन वेयर यू काइंड ऑफ हैव कस्टमर्स ऑलरेडी, most of them, some of them, and you kind of know what they want. So it's like a third maturity stage, creation. And fourth is the company building, where you already have the customers and they are buying from you, and you have a repeatable, successful business model where you graduate from a startup to a company focused on executing a validated model. ठीक है, तो आज हम डिस्कवरी के बारे में ज्यादा बात करेंगे. दिस वाज जस्ट अ कॉन्टेक्स्ट टू कीप यू मोर इंटरेस्टिंग and keep you more interested and giving you more context. तो अभी हम आज का टॉपिक देखते हैं. तो आज हम ये चारों चीजों पे बात नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्कवरी, वैलिडेशन, क्रिएशन एंड कंपनी बिल्डिंग. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट कस्टमर डिस्कवरी. तो कॉन्टेक्स्ट से हमें ये पता चल गया कि दिस इज अ बिग टॉपिक एंड वी विल हैव maybe have a separate meeting for customer validation, creation and other stages.
ठीक है, let's begin with a beautiful quote here. A journey of 1,000 miles begins with a single step. इसके ओरिजिनल जो ऑथर हैं कोट के वो है लाओ त्सु. He was a Taoist Zen master and he wrote the book Tao Te Ching. It's a very, very famous, slim, very core spiritual book, very profound philosophy. So Lao Tzu said, a journey of 1,000 miles begins with a single step. It means nothing but कि आप एक एक स्टेप से ही अचीव करते हो फाइनली. ठीक है. So we are going into the topic now for customer discovery. Develop the product for the few, not for many. ये किसी को उल्टा लगेगा. किसी को उल्टा लग रहा है क्या पढ़ के? क्या मीनिंग है? कोई इसका ट्राई करेगा क्या? Can someone try to explain what this means in general business context? Develop the product for the few, not for many. Focus is one word to say this. Where is your market focus? Are you developing your product for everyone? अगर हमसे कोई पूछता है कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो और अगर हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट सबके लिए है, then you have not found the answer. Then you are wrong because not every product is for everyone. Right? So develop the product for the few. You need to have a very target, very specific, defined customer manifesto, defined customer characteristics and defined market. ठीक है. Let's see evangelists. तो कस्टमर डिस्कवरी में ना इवेंजलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. इवेंजलिस्ट कौन होते हैं? कोई I'll give some examples and then it may sync with you better. जैसे कोई नया कार लॉन्च होता है, ठीक है, तो कुछ कार फैंस होते हैं जो जल्दी से पहुंच जाते हैं या पहले से इंक्वायरी करते हैं. दे वॉच ट्रेड शोज, दे वॉच ऑटोमोबाइल शोज टू फाइंड आउट विच कार इज बीइंग लॉन्च्ड एंड व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द ब्रेकिंग सिस्टम एंड how does the AC work and all that. So there are some car evangelists. Similarly, there are evangelists in all the other sections of the market as well. फूड प्रोडक्ट्स में भी कुछ इवेंजलिस्ट होते हैं कि सबसे पहले बिस्किट कौन सा नया आया है, ये फूड का कौन सा आया है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट, राइट. आउटगोइंग ईटर्स भी इवेंजलिस्ट्स होते हैं जो सबसे पहले रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. दे आर हैप्पी टू राइट रिव्यूज, दे आर हैप्पी टू सबमिट गुड रेटिंग्स ऑन स्विगी एंड ऑल दैट सो दैट द बिजनेस ग्रोज. इवेंजलिस्ट, द वर्ड इटसेल्फ मींस इज प्रीचर्स. तो अर्ली टाइम में जो मिशनरीज होते थे, जो स्पिरिचुअली जो कन्वर्ट करते थे, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट their religion. Those basically traditionally the term comes from that. But in business sense or in startup sense or in customer development sense, early evangelists are the most important customers which have the following characteristics as you see on the slide. तो हमें ऐप बनाना है, किसी को बैंक टेलर मशीन बनाना है, किसी को होम प्रोडक्ट बनाना है, किसी को नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाना है, किसी को डिजिटल करेंसी का प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स लोग बनाते हैं. ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स नीड अर्ली इवेंजलिस्ट्स. अर्ली इवेंजलिस्ट कौन होंगे? अर्ली इवेंजलिस्ट वो लोग होंगे जो 100 people, 50 people, 10 people, a list of people who want to adopt that product early, who want to preach your product early, who want to review and partner with you at early stages of your development. Not necessarily कि आपका प्रोडक्ट बना भी है, but these people may even give you orders early. कि हाँ, yes, super, what you're doing, we are interested, we even pay you in advance. ठीक है, तो अर्ली इवेंजलिस्ट्स वो लोग होते हैं जो जल्दी खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं. एवरी मार्केट में हैव डिफरेंट अर्ली इवेंजलिस्ट्स. दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन लोगों और एनी बिजनेस? तो दे हैव अ प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 1. इसका मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन. For example, someone traveling by bus may be looking or facing a lot of time in the public transport and wants to buy a car. These kind of people may be interesting for the car companies. है ना? उनको पता है कि उन लोगों को टारगेट करो जो कार खरीदना चाह रहे हैं and they are a lot of tired with the daily commute using public transport. They are facing a lot of problem and they have the budget also. Very important. Then second important point is aware of having a problem.
बहुत सारे हम में से लोग हैं जो अर्ली इवेंजलिस्ट नहीं होते हैं। हम कुछ लोग क्या करते हैं, हमें पता है, हम ट्राइड एंड टेस्टेड वाले लोग होते हैं। बाकी की कोई पूछेगा अरे अर्ली इवेंजलिस्ट के फिर अलावा कौन से मार्केट में कस्टमर्स होते हैं, तो बहुत कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। एक कैटेगरी ये है जो अर्ली इवेंजलिस्ट में नहीं आता, वो बोलेगा कि बाकी लोगों को खरीदने दो, ट्राई करने दो, then once it is all good and all, I will also buy. They follow the lead, but they don't want to become an early evangelist. Some people are like that. But in this case, these early adopters, as you can also call them, they are aware of having a problem. कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए. They are aware of this. That's why they fall into this category. Then they have assembled a जुगाड़ based solution out of parts. तो किसी को अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए समझो, तो अकाउंटिंग का जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए डेस्परेटली, और द वन हु इज अर्ली इवेंजलिस्ट, वो अभी कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना अकाउंटिंग करने के लिए। कहीं पे डायरी में लिख रहा होगा, कहीं पे ऐप में डाल रहा होगा, कहीं पे एक्सेल शीट में डाल रहा होगा, एक्सेल शीट में मैक्रो बनाया होगा, है ना। कुछ ना कुछ किया होगा उसने जुगाड़, कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा, कुछ ना कुछ एफर्ट लिया होगा। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर एफर्ट लिया है सोल्यूशन बनाने के लिए, even though it may be a poor solution or a manual solution or a जुगाड़ kind of a solution, but अगर एफर्ट लिया है तो इसका अर्थ है कि आपको सोल्यूशन पे आप इंटरेस्टेड हो, राइट। नहीं तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, हमें पता है। तो ऐसे लोग भी अर्ली इवेंजलिस्ट में जाते हैं। देन बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली इवेंजलिस्ट। डिस्कवरी में हम अर्ली इवेंजलिस्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली इवेंजलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस फेज के लिए, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग एज अ स्टार्टअप, because you don't know your proper customer markets or customer or target markets yet, you are very much keen on finding early evangelists. क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसे 50-100 लोग आपने आइडेंटिफाई कर लिए who are evangelists for your product, they will help you in lot of things. What are the things they can help in? जैसे मैंने पहले बताया, they will be the app downloaders, first app downloaders, or maybe the product downloaders or product users if it's a physical product. If it's a toothpaste, those will be the people who will brush their teeth with your toothpaste to give it a try without hesitating. ठीक है, वो ब्रश करने के लिए रेडी हो जाएंगे, आप नया टूथपेस्ट लेके आएंगे, तो ये अर्ली इवेंजलिस्ट हो गए, जो जल्दी से रिव्यू देंगे, जो जल्दी से खरीदेंगे, जो ऑर्डर एडवांस में दे देंगे, है ना। नॉट ऑल कस्टमर्स विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी, बट स्टार्टअप्स एंड कस्टमर डिस्कवरी के लिए ये अर्ली इवेंजलिस्ट का लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कॉल देम अर्ली अडॉप्टर्स एंड सो ऑन। दे विल आल्सो इवन हेल्प यू विद द कस्टमर फोकस ग्रुप्स, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो हमको दिखाओ, हम कस्टमर टेस्ट करेंगे, उसके यूजेबिलिटी टेस्ट, एंड देन वी विल कम बैक विद फीडबैक टू यू। दे विल इवन हेल्प यू डेवलप द प्रोडक्ट। ये लोग इस लेवल तक भी जा सकते हैं। they may even be ready to pay you advance. So finding these early evangelists in every business is very key, especially in the customer discovery process. That's why we are talking about early evangelists. And then most important, they have an acquired budget. Why acquired? Because the from evangelists can be from a company. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, सम कंपनी मेक्स एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बट उसके बायर्स कौन होंगे? एंड यूजर्स नहीं होंगे। इट्स अ बी टू बी प्रोडक्ट। जस्ट इमेजिन इट्स अ बी टू बी प्रोडक्ट एंड द कंपनी वांट्स टू सेल इट्स अकाउंटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म टू कंपनीज अगेन, बिकॉज कंपनीज के अंदर फिर अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, और अकाउंट डिपार्टमेंट में फिर अकाउंटेंट्स होंगे, सीए होगा, सीएस होगा। सो दीज पीपल out of these accounting departments, some of these people may be your early evangelists जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सीए बताएगा, अकाउंटेंट बताएगा कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आता है अकाउंटिंग में, सो व्हाई डोंट वी गो फॉर अ सॉफ्टवेयर। तो सीईओ को जो कन्विंस करेगा, वो कौन कन्विंस करेगा? फाइनेंस ही कन्विंस करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कन्विंस करेगा। अर्ली इवेंजलिस्ट मे बी फ्रॉम finance or accounting department if you want to sell an accounting software to the company. So early evangelists may be a business end users, end customers for B2C kind of products, like Love and Heal is a B2C product, directly to consumer, business to consumer. And for B2B products, you may have early evangelists ranking in the company. So you may need to impress them. You may need to set appointments with them. You may need to call them regularly. है ना, कि सर ये देखो, इसका रिव्यू करो. So you may need to hunt for early evangelists. Finding early evangelists is very key for startups and for customer discovery phase. Let's go further. ठीक है, और क्या आता है कस्टमर डिस्कवरी में? कस्टमर डिस्कवरी में हमने बात किया था कि हाइपोथेसिस आते हैं, टेस्ट्स आते हैं, है ना। विजन को हम हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और टेस्ट्स आर नथिंग बट रिपीटेबल, सिंपल, cheap experiments that you run, not cost intensive but cheap. Why cheap?
because discovery, we are just beginning to even discover customers, right? You haven't found your business yet, you haven't made profit yet, you haven't got a list of trusted customers yet. So cheap and quick experiments. ठीक है, let's talk about MVP. Very very important. MVP कुछ लोगों ने सुना भी होगा. It's called as minimum viable product. ठीक है, इसको मिनिमम फीचर सेट भी बोलते हैं, MFP भी बोलते हैं कुछ लोग, मिनिमम फीचर्ड प्रोडक्ट, और some people may call it MVP. MVP the term is very famous, ज्यादा लोग यूज करते हैं. MVP क्या होता है? MVP is not your mock-up, ठीक है, and MVP is not your full-fledged product, working app in all its glory with all its features. इन दोनों के बीच में दो चीजें आती हैं. देखो, एक है बिल्कुल स्क्रैच वर्क, फॉर एग्जाम्पल योर मैनुअल डिजाइन और योर मॉकअप. दिस कुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. मॉकअप से भी पहले यू मे हैव स्टोरीज और हाइपोथेसिस, लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. Mockups can be your low fidelity MVP. Low fidelity is just a visual or a 3D or a nice visual representation of what you are demonstrating or what your product solves. What kind of problem your product solves, ये आप mockups में दिखाते हैं to make it visual, or you show a design. That is low fidelity. Then another stage is high fidelity MVP. High fidelity is more responsive design. So it's not just maybe a Figma. Even if it's a Figma high fidelity, then it is all linked. You click on the Figma, you click on get started, it takes you to the next screen. You fill in the form and you click on login, and it almost works. Typically speaking, high fidelity will be a low featured app with the low features, or a website, or some kind of a working product. तो MVP में देखो दो चीजें आती हैं यहाँ पे, एक है मिनिमम, एक है वायबल. दोनों का सेंटर पॉइंट जो है, दोनों का जो इंटरसेक्शन सेट है, those are the good zones, because minimum is, you see, products nobody wants to use, है ना, क्योंकि आप 100 फीचर्स बनाएंगे तो let's say customers want to use only 5. You only don't know which 5. You may end up creating 100, but you don't know which 5 they will use. But then viable means cost, viable means time, viable means engineering effort, viable means vision. तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक MVP बनाते हैं. यू कम अप विद, लेट्स से आप बोलेंगे ये 50 फीचर्स हैं, बट इसमें से चलो ये 5 मुझे लगता है कस्टमर्स यूज करेंगे, ये MVP बनाओ. देन आफ्टर रनिंग द टेस्ट आपको पता चला कि ये 5 में कोई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है. फिर देन व्हाट यू विल डू, you will do 5, you will take 5 more, or you will add, let's say, 7 more and previous 5, and show the 12 together to the customer, or maybe in batches and phases. And then customers make show, point their fingers at some of them कि चलो ये 7, 8, 9 ये 3 अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे. तो MVP का अर्थ ये है कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट बनाते हैं. इट मे स्टार्ट विद अ POC, टेक्निकल POC, और इट मे स्टार्ट विद अ मॉकअप डिजाइन, है ना. इट मे स्टार्ट विद ईदर एंगल. Engineering effort, it may start as a POC. For use case and proper business angle, it may start as a user stories or mockups. But the idea is MVP is a minimum viable product. जो जल्दी से viable है, जिसको बनाना possible है. Minimum is with minimum and quality feature set, may not be working fully. And the product. Why I say product? That means it's not a printout. इट्स नॉट अ प्रिंट आउट कि कोई बोलेगा ये मॉकअप्स बना देते हैं और फिर प्रिंट आउट लेके कस्टमर को दिखा देंगे. यस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज वेरी वेरी लो फिडेलिटी फॉर वेरी वेरी इनिशियल टेस्ट. MVP comes where your product is at some basic level which you can show to the customer, maybe clickable in, at least on some of the flows it may be clickable. It may not be working fully, it may not be implemented to execute all the features, but working in some scenarios. ठीक है. MVP is very very important. Evangelists are very very important for a customer discovery phase. तो हम क्या करते हैं, साथ साथ ये सारी चीजें चलती हैं. डिस्कवरी फेज में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें साथ में चलती हैं. हम हाइपोथेसिस लेते हैं, विजन को हाइपोथेसिस में लिखते हैं, टेस्ट्स लिखते हैं, वो टेस्ट्स को रन करते हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट्स को इटरेट करते हैं as many times as needed. We find out evangelists and we build MVP parallelly. क्योंकि MVP बनाना, देखो, दो थ्रेड से मैंने बताया. बिजनेस टीम और UI UX टीम will start from the mockup side, but from the technical it may be a POC. ठीक है. Then very important, there is something called as a business model canvas. तो बिजनेस मॉडल कैनवस पे हमने थोड़ा सा पहले बात किया है. वी हैव आल्सो हैड वन सेशन इन द पास्ट ऑन कस्टमर डेवलपमेंट मैनिफेस्टो ऑन द सिमिलर टॉपिक.
But those were the 22 or few of the principles, some of the rules that should be, that are basically the key rules for the entire customer development journey that we explained in the early, when we started earlier. All the 4 steps. तो वो मैनिफेस्टो का हमने सेशन किया था. बट बिजनेस मॉडल कैनवस उसमें हमने ब्रीफली शायद डिस्कस किया था. बिजनेस मॉडल कैनवस इज अनदर टेक्निक which is created by someone. It creates a canvas basically of 9 to 10 boxes that you have to fill as a startup or on a periodical basis. तो ये स्कोर कार्ड हम देखते हैं. It's a balanced scorecard management tool. It makes possible to, business model canvas is a strategic framework or tool that helps organizations to break down their customer journey in 9 blocks. ठीक है, तो ये 9 ब्लॉक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो देखो बिजनेस मॉडल कैनवस में ये 9 बॉक्सेस आ जाते हैं. की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज, आई विल रीड देम आउट. वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर सेगमेंट्स, की रिसोर्सेस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड चैनल्स. ठीक है, तो ईच ऑफ दीज आर 9 कोर वर्टिकल्स or 9 key areas where we need to work hard and define all these things, and not just define them for one, continue to define them every month unless you have a product market fit, unless you have a profitable business model. तो हम as a startup हम क्या करते हैं, इसको स्कोर कार्ड की तरह यूज करेंगे. We can just go through it to give you a better idea. ठीक है, think of key partners. Key partners are nothing but our infrastructure partners or our, let's say, vendor partners. You can see AWS, Facebook, Canva, Google, all the vendors that we are using. Then let's see key activities. Key activities are nothing but what you will do to achieve your value proposition. Value proposition हम पहले देखते हैं. Swipe to get healed हमारा एक value proposition है. हमने MVP value proposition पे भी एक session किया था that listed out various kinds of value propositions for Love and Hail. Some of you may remember that. But as a value proposition here, you see 2 of the key activities that we do. One is swipe to get healed. You can take a one-click real-time healing, train healers, call to get healed. Then offline services that we have, Reiki courses, Vastu consultation, healing courses, products, and other things that we are adding. Okay. Then how will you achieve this value? By doing these key activities. So what are the key activities? We refine the business model, we develop the product market fit, we develop testing, DevOps, marketing, telecalling. What are the customer relationships? We will build an in-house CRM system, marketing database, customer development team, brand team, record and act on continual feedback from customers. Then customer segments में market आ जाता है, target address market and total available market and serviceable available market, SAM. Anyone who is stressed, customer segments में क्या है? What are our customers? जो पहले हमारा, you saw that point, right? In discovery, I mentioned that we need to find who is our customer. Few, not for the many. तो वो जो few है, वो कौन से few है, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको customer segments में कि who is our customer, who will use our product, or who will use, someone looking for health benefits, career health benefits, age group 12 to 60, for example. ठीक है. Then we may add more details here after in the next few weeks as or in the future as we go through more and more discovery and validation process, we will get more data points. है ना, कहाँ पे जा रहा है, क्या डिमांड्स आ रहे हैं, on based on that we'll keep to fine tune it. Then key resources is what are the resources that we are using? Intellectual resources, people resources, infrastructure resources, property related resources, and all the resources. So in resources we have our team, healers, developers, testers, telecallers, everyone, freelancers. Intellectual properties, trademarks, company websites, USPs, and everything. Then cost structure में आता है कि आपके क्या क्या expenses होंगे, how will you manage development costs, vendor costs, campaign operation, cloud support, and everything. Revenue streams, very, very important, and channels. Revenue streams is how will you make money or how will the company make money. Sell offline healing therapies, courses, consultations, and products. Then subscription and ad hoc charges from digital users. Using app. So using app, we are still building the subscription system or
the payment system. But think of revenue streams as all the list of all items through which company wants to make money, how they propose to make money. Channels may, it's different from key partners. Key partners are people who support us doing what we do, and channels are the actual channels that we use to expose our services or reach out to customers. So channels can be, you can see, there could be something common. Channels could be Facebook, our own website, iOS, Android app, LinkedIn, Google, Telegram. Offline is people reaching people through other talking to them and basically and so on. ठीक है, तो बिजनेस मॉडल कैनवस में ये सब आ जाता है। ये जो इसमें इंफॉर्मेशन भरा है ये हमने लेवन हिल के लिए भरा है, दैट वी फिल्ड सम few weeks ago, so it may be old, so don't get this thing. We still need to add, if we need to update, we need to continually update it. तो जो इसमें थोड़ा है रेफरेंस, you will get some ideas as to how to fill this. This technique is called as business model canvas. तो ये भी एक important है in the discovery to keep in mind. Yeah. Let's go further. Now, before we enter into our set of questions, but let's go to the questions that we have. So all of this customer discovery process that we discussed can be defined in 4 questions. 4 क्वेश्चंस में इसका पूरा समरी हम बता सकते हैं। तो देखो, थोड़े लेवल पे हमने समझा कि डिस्कवरी में क्या होता है। डिस्कवरी में हम टेस्ट्स लिखते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। Which tests we will go into that detail also. But for today, we are just understanding what is customer discovery at a high level. We also understood the other steps: discovery, validation, creation, and company building. But for discovery purpose, we understood what are some key activities. One key activity is early evangelists. Another key activity is business model canvas. And another key activity is MVP. So you continually, slowly, as you go from one stage to another, you continue to develop and build your MVP based on the customer feedback. Now let's go to the questions section. Now there are 4 questions that sums up the customer discovery. We will just see them one by one quickly. Have we identified a need customer wants to be solved? सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कवरी को अगर आपको 4 क्वेश्चंस में लिखना है पूरे डिस्कवरी स्टेप्स को, so these are the 4 questions you should be asking. What are they? Have we identified a need customer wants to be solved? So whoever is your customer, have you identified a need, a right business need or a customer problem that you will be solving? आप जो बना रहे हैं प्रोडक्ट या आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको, वो किस नीड को सॉल्व करता है, वो किस पेन पॉइंट को हीलिंग करता है, वो किस पेन पॉइंट के लिए मेडिसिन या प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा है। ठीक है, have we identified a need the customer wants to be solved? This is one question. Second question is, does our product solve this customer need? तो आप देखेंगे तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर में ही सम अप हो जाता है डिस्कवरी का पूरा प्रोसेस. What is the need that customer want to be solved? Does our product solve this customer need or not? Second. ठीक है. Third question is, do we have a viable and profitable business model? Very, very important. So, ठीक है, you identified the need, then you will build the product, you will showcase your services, you will continually write more features, create more features in the app or website or your product. But then, do we have a viable and profitable business model? ये कैसे पता चलेगा? This will, after running through some experiments, after running through some tests, as you continue to develop your product based on customer feedback, you will eventually know whether you have a viable and profitable business model. The idea is to know it as early as possible. That is the aim for customer discovery process. तो पहले क्या होता था कि startups or the companies they will just start what they want to do, and they would lack a structured process for testing their business models and hypotheses. So startup will start, but they will not test their hypothesis, like market hypothesis, market related hypothesis, customers, channels, pricing related hypothesis. They had just some guesses, and they would not do experiments to turn their guesses into facts. तो क्या होगा? They will fall flat on some grounds. The startup may suffer a lot. अभी क्या होता है? अभी as an intelligent discovery process or as an intelligent
technical venture, the companies go through this process very robustly. They go through all these phases of customer discovery, of validation, and so on. Because once they reach their business model, they are fully sure, or you can also say this is a step-by-step journey of success. Instead of doing things haphazardly, this customer development process lines up all the steps for us or for all the startups to validate these things step by step. Then, so we start with, the question starts with, does the customer has a need that wants to be solved? Do you have a product to solve this? Do you have a profitable or viable business model? And have we learned enough to go out and sell? Fourth question, most important. तो डिस्कवरी से हम क्या करेंगे? डिस्कवरी से we will learn based on the customer feedback, so that we can go out and sell. What will we sell? We will sell whatever the product, the refined product is developed until the end in this process, that we will sell. But how do you know it will sell? For that, you have the customer discovery process. You will identify the customers, you will identify the need, you will run a lot of experiments for the market, you will run a lot of experiments and tests for customers, and each of those boxes that we saw in business model canvas. So business model canvas में basically जो 9 डब्बे देखे आपने 10, those each of those boxes, around those boxes we need to devise experiments. तो जैसे की एक्टिविटीज है तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे हमारे, लाइक agile related experiments for example, or the process optimization related experiment. Value proposition experiments, we may need to validate our value proposition with customers, some experiments like that. Cost structure, yes, we need to see whether which offers are going better, whether are we covering our costs, are there any hidden costs. In customer segments, your tests may go to market, your tests may be to understand TAM and SAM, target available market, total available market, and serviceable available market. Channel-based experiments will tell you which channels are fruitful for you. For offline products, offline channels are sometimes they are good. Which online channels will be useful for you? How do you have strategy to penetrate the other channels? ये सबके लिए tests होते हैं, ठीक है? Like we have some channels already. तो कुछ पार्ट इसमें से हम ऑलरेडी कर रहे हैं, and for today we are understanding what all is part of customer discovery. तो ये 4 क्वेश्चन से पूरा सम अप हो जाता. So that was it. These are the 4 questions and it was a short one. That's a wrap for today. Thank you for your attention and time.